प्रेशियस पीपल, गुड मॉर्निंग गाइज। आज के प्लान्स कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैं लूँगी ट्यूशन्स। आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ ट्यूशन्स लेने। आई विल टेक माई ट्यूशन्स एंड आई शैल कैच यू सून आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्यूशन्स. So yeah. Alright you guys, so I was done with my tuitions and tuitions के बाद मुझे एक बहुत important काम था and that was to edit my little sister's project report and उसकी alignment करनी थी. मैं उस काम में लग गई एंड गाइज इस दिन वक्त कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला बिकॉज आई वोक अप एट अराउंड 10 AM एंड उसके बाद फ्रेश होकर प्राणायाम करके ब्रेकफास्ट करने में ही 2 आवर्स बीत गए एंड उसके बाद 12 से लेके 2 तक मेरी ट्यूशन चली एंड उसके बाद मैं तुरंत इस काम में लग गई एंड इस काम को करते करते आई लिटरली फॉरगॉट कि 5 कब बज गए एंड आई हैड टू गेट रेडी बिकॉज मुझे घर जाना था बिकॉज इट वॉज माई आत्याज बर्थडे. सो दैट्स वाई आई स्किप्ड माई लंच एंड आई फिनिश दिस वर्क क्विकली एंड उसके बाद मैं फ्रेशन अप होने चली गई. Hello my precious people, I just freshened up a bit and now I am quickly doing my skincare because I need to go to my relatives birthday party. Yes, but guys, before that we need to head to the airport. So yeah, first we'll go there and then pick someone up and then we'll leave. Yes you guys, someone's coming and who is coming I will definitely show you in the vlog ahead. And guys, I'm so excited about that. So let me just quickly complete my skincare and uske baad I will do my makeup. When I was editing my sister's report na, I just uploaded that shot and वो काम करते करते I got इतना ज़्यादा busy कि मेरा shot upload ही नहीं हुआ because I just forgot to click on the upload button. And you guys, seriously I felt so damn freaking bad about that. बट ठीक है, कोई नहीं, होता है. एंड दैट शॉट इज़ थोड़ा ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज वेर इन आई स्वॉच माई लिपस्टिक ऑन टू माई बेयर स्किन एंड सी हाउ दैट लुक्स. सो इसीलिए इट वॉज द वेरी फर्स्ट एपिसोड. आई थिंक मैंने इसका पहले भी किया हुआ है बट आई जस्ट डोंट रिमेंबर, इसीलिए आई स्टार्टेड इट अगेन एंड फर्स्ट एपिसोड ही लेट हो गया. ओह माय गॉड. Okay, leave it. Now I will quickly get ready, do my makeup and I will definitely shoot it short and I shall catch you the moment I get ready. So guys, हम ready होके निकल गए. This was my look and the time was around 7:30. We headed to the airport and look at the jam you guys. इस ट्रैफिक जैम ने तो आज परेशान कर दिया था. बट गाइज पूरे रूट पे जैम नहीं था, कुछ कुछ जगह पे जैम क्लियर हो गया था बट कुछ कुछ जगह पे इट वॉज एक्सट्रीमली पैक्ड एंड द मोमेंट जैम क्लियर्ड आई स्टार्टेड जैमिंग ऑन टू सम म्यूजिक which I really like. Guys, if you have been seeing me for a while, you might be knowing that I extremely enjoy such kind of drives where I am just a passenger princess enjoying jamming onto music. And in this clip you can see that we reached the airport. This is Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport and it is so beautiful. I will show you now कि इसे कितना beautifully बनाया गया है. The architecture, the little elements present in this place, वो सारे मिलके इस जगह को 4 चांद लगाते हैं. Can you see the changing lights, all the flags and stuff जो G20 के लिए लगे थे. And guys, meet my दादी. She is my दादी's younger sister and I was so excited when I got to know that she is coming. And उसके बाद we headed towards my Atya's place जहाँ पे birthday party थी. Happy birthday! And guys, you would be mesmerized to see what a beautiful bond they share. Oh. And guys,
सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाने के बाद हमने केक कट किया एंड ट्रस्ट मी द केक वाज एक्सट्रीमली डिलीशियस एंड उसके बाद वी डिड राखी सेलिब्रेशन. आई नो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था फॉर राखी सेलिब्रेशन बिकॉज इट वॉज 9th of September बट गाइज उसके पहले एवरी वन वॉज बिजी सो राखी के लिए टाइम नहीं मिल पाया. सो वी थॉट कि इस दिन एवरी वन वुड बी प्रेजेंट अंडर वन रूफ सो वी वुड सेलिब्रेट राखी देयर itself. So guys, this is a wholesome family vlog wherein we share so many moments of intense laughter and our bonds get stronger. Good morning my precious people, what is up guys? Happy Sunday. It is the next day by the way. कल रात हम कुछ 1 बजे वापस आए थे I guess and we were so tired that I just removed my makeup and went to sleep, but I was so excited about the Rakhi gifts that we opened it. Yes, I will show you later in the vlog कि हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं. बट गाइज उससे पहले though it is Sunday but for my tuitions it is a working day because मेरे students की half yearly exams are round the corner. So इसीलिए let me first take my tuitions and I will catch you after that and also I will show you what all gifts I got. So yeah. Hello my precious people, I am done with my tuitions and now I will be showing you all of the gifts that I got yesterday. So yeah. Guys, the very first thing that we got is this hair dryer. It is from D Homes. Then the next thing that we got is this vacuum flask. It is also from D Mart. Next thing that we got is this one. It is the 8-in-1 eyeshadow and highlighter palette. And guys, this is from Matte Look Cosmetics. The next thing is this perfume. I know this is extremely old brand. It actually smells extremely good and this used to be one of the most favorite brand that my mom used to use. So guys, these are the gifts which I got from my brothers. Now let's start with the gifts that I got from my bhabis. Very first thing that we got from our bhabis are these prettiest jhumkas. Guys, can you see how pretty these look? And along with the jhumkas I got this ring too. Both are so pretty. Then I got 2 sets of bracelets. Yes you guys, these are bracelets. I haven't opened them yet. ये packed ही है. So this is the first one and you guys this is the second one. इन दोनों को मैंने अभी तक open नहीं किया है. So yeah, and you guys, the next thing that we got are these nail colors. These are from Chambord. These are their Color Studio Lee Squad Nail Enamel. Alright you guys, let me quickly share with you the swatches of the eyeshadow palette. Also guys, can we just appreciate the glitters in this palette? Wow, so lovely, right? This vlog. If you like such kind of छोटे vlogs, please give it a big fat thumbs up, share as much as possible, subscribe to my channel and follow me on all my socials. Link would be in the description bar below. Also write down in the comment section what do you want to see next. Remember, your wish is my command. Till then, this is me Vin signing off. I shall see you in my next video. Bye.